कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। I've had a bad sleep like I had last night. I did not have good sleep and I woke up feeling awful. I was feeling all the time. But when I came here and saw all you guys, seemed like I'm among my friends, I perked up. So, but once in a while, sleep agar garbad hai to is not a problem. But if it is on continuing basis, हमेशा होता रहता है, then this is a problem because sleep is the activity in which your brain is active to clear up all the filth which has accumulated in the brain, and that's what refreshes your brain. So it is very important. अगर sleep proper ना हो तो उसकी वजह से बहुत सारे problem होंगे, and dementia is one of them. And another risk factor, heavy use of alcohol. Once in a while, I mean, a glass of wine here and there has no effect on that, but if somebody is drinking heavily and habitually, then that is a big problem. Well, street drugs, including marijuana, has been linked to dementia, so that's not a good idea. Air pollution. Air pollution is a big problem, and Delhi में तो काफ़ी air pollution है. अभी एक Dr. Banerjee, he is a lung surgeon in Delhi. He stated that he has been doing surgery for 30 years, and he said that in the beginning when he used to open the lungs of thorax of patients, then he used to see pink and red lungs. Now he opens and routinely he sees them black because of the air pollution. He went to say, which was very impactful, कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, he is breathing, and what he is breathing is polluted air. So what is like smoking. So the kid is smoking from the first day of his life. By the time he's 25, 30 years, he has been a smoker for 25, 30 years. That's why all the lungs have got black deposits, which is not healthy, and that is a cause of dementia as well. Infections like herpes, although it is an oral infection, but the virus itself has a capability of traveling to brain, infecting brain, and that can be responsible for developing Questions. question. अच्छा, कहाँ है? Questions, I am saying. Okay. Anyone has a question?
You have a question? No, I'm saying, ask. Okay, if anybody has a question so far, Yes. yeah. What I was wondering was, what can you do in, so that you don't reach that level of... Sorry? What I'm saying is, Give it. that can we prepare ourselves that we don't reach that level of dementia and Alzheimer and all that? Is there any way we can do every day? Oh, yeah. I'm coming to it. Okay. I'm coming to it. Okay. हाँ है Oh yes. Hearing some voice. Hearing some voice. You mean? Oh. Okay. Well. Right. Yeah. Well, this is a multifactorial condition, and you have to consult a physician to see what can be done. And I hope it does not have a psychological component. If it is not emotional, then it is physical, and if it is physical, then I think it is a good idea for you to consult a physician to see what can be done about it. हाँ बोलिए. Oh yeah, absolutely. I'm coming to all that. अभी तो sorry. Looks like I may not be able to complete everything in the hour assigned to me. No, you can do next time also, no problem. Okay. Time is no problem. Okay. एक वेरी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं इसके बारे में कि एक अमेरिकन स्टडी हुई जिसमें कि उन्होंने देखा कि if people have lost the sense of smell, that loss of sense of smell can predict 5 years sooner that person is likely to develop dementia. And so that is something to keep in mind. So now I'm coming to next topic. I think I should rush and get through some of the important things. डिमेंशिया के कई तरीके तो 5 तरीके के टोटल हैं. पहला जो मोस्ट कॉमन है वो अल्जाइमर डिजीज़ है, उसको तो मैं सेपरेटली ट्रीट करूँगा. और इसमें जो है 60 to 80% ऑफ द केसेस ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स. और अल्जाइमर्स happens due to some specific changes in the brain, and I will tell you. देखिए आप हाँ चुप करके सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी. जी, नो टॉकिंग. यस. तो स्पेसिफिक चेंजेस ब्रेन में होते हैं, क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा. और दूसरा होता है वैस्कुलर डिमेंशिया, इन विच ब्लड सर्कुलेशन इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली टू द ब्रेन एंड दैट कॉजेज डिमेंशिया. वो जैसे स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों में इनका सिम्टम ये ऐसा है कि स्टेप वाइज इंक्रीज करता जाता है. वजह ये है कि ब्लड सर्कुलेशन शुरू में थोड़ा कम हुआ तो डिमेंशिया का सिम्टम माइल्ड है, थोड़ा और हुआ तो थोड़ा और हो गया, थोड़ा और ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो थोड़ा और सिम्टम बढ़ गया. इस तरह से स्टेप वाइज इंक्रीज करता जाता है. थर्ड टाइप ल्यूली बॉडी डिमेंशिया. इसमें जो है ये यू लूज ए सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. सो दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग योरसेल्फ. एंड सीनियर सिटीजन्स का फॉल गिरना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टू हैव दैट. एनीवे सो और फोर्थ इज़ अ फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, जो कि फ्रंटल रीजन में जनरली डिमेंशिया जो है वो बिगिन होता है ब्रेन के उस सेक्शन में जिसको कहते हैं हिपोकैम्पस, जहाँ पर कि मेमोरी स्टोर होती है, उस वहीं पे बिगिन होता है. लेकिन अब इस तरह के जो डिमेंशियाज हैं इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो जगह जगह का डिमेंशिया शुरू हो जाता है. तो इसी वजह से जब फ्रंटो टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और टेम्पोरल लोब्स में, जो कि दोज आर
frontal cortex, cerebral cortex is important for your intelligence and reasoning and thinking, और इसमें जो है temporal lobes जो हैं, they are responsible for your daily functions, so उनमें problem होने लगती है. And fifth type is mixed dementia. So mixed dementia में more than one type of dementia जब हो जाए, that is fixed dementia. Let me come finally to all my Alzheimer's disease, and this is a very dreaded disease, and in the sense that it doesn't affect just your memory, it affects your entire life. It affects the way you talk, the way you can walk, the effect you can eat, the way you can sleep, all these things, everything is affected by it. And affects the way your body works. And so essentially what it does is it disrupts the brain and body connection. वो कैसे होता है अब आपको बताता हूँ. Cause तो इसका क्या है, क्या cause है, क्यों होता है, it hasn't been found out yet. People, and scientists are doing research, scientists and clinicians are furiously involved in research, finding out the causes and full treatment. But अभी दोनों ही नहीं हुआ है. So, but the mechanism is known as to how it happens. What happens is, let me just give you a bit of understanding of brain, which will help to clearly understand. Brain जो है, maybe I should put this in here. Brain जो है वो, of course it is inside the head, the skull. The skull is the bony part of it. उसके अंदर क्या होता है कि एक thick membrane है, which goes all around, encloses the whole cavity. वो कहलाती है dura mater. वो strong and thick membrane है. उसके अंदर पे एक और membrane होती है, वो much tender होती है and softer होती है. That is called pia mater. और उसके अंदर जो है, अब जो पूरी कैविटी बन गई है, उसमें पानी जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसको cerebrospinal fluid कहते हैं. और इस cerebrospinal fluid में ब्रेन जो है, it is floating all the time. It is floating, and brain is a very complex structure. Outside part of the brain is called white matter, which is not responsible for nerve functions. उसके अंदर जो है, वो जो most sensitive part of the brain, most important part of the brain is the gray matter. और gray matter जो है inside है. देखिए कितना protect किया है nature ने brain को, because brain is the important organ. और इसमें क्या फिर ग्रे मैटर में क्या होता है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, and millions of them, and these nerve cells are called neurons. और इनमें क्या होता है कि these send out different branches, all kinds in all directions. और जो पतले पतले branches होते हैं, they are called dendrites. और adjacent neurons के dendrites जो है, they connect together, and when few neurons or several neurons, they have connected together, they make a neural network. आपस में connection, जैसे हम लोगों को 10 फ्रेंड्स हैं, सबका फ़ोन नंबर मालूम है, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, उससे से कनेक्शन हो जाता है. And they are responsible for one simple function, one single function. But हर न्यूरॉन एक ही फंक्शन नहीं करता है. It may connect on the other side of the adjacent neuron, on the other side, and that is connected to other neurons, so it is responsible for other function. So essentially what होता है जब Alzheimer's disease में, कि unfortunately there is an unhealthy protein which is called amyloid and another one tau. They develop inside the brain and they make clumps, and these clumps sit on that dendrite connection, and then essentially what happens, that they disrupt the connection of communication between them. The communication between neurons happens by electrical signals, which is developed in one neuron and passes through
those dendrites, और वो जो है बंद हो वो रुक जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसी वजह से होता ये कि जो फंक्शंस हैं, बॉडीली फंक्शंस जो हैं, दे गेट अफेक्टेड एंड दे दैट रिजल्ट्स इन डिमेंशिया। ऑल्सो ये प्रोटीन्स जो हैं दे किल अदर न्यूरॉन्स, जो है जब ये न्यूरॉन्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नॉट ओनली ऑन nutrition and oxygen but also on communication with adjacent neurons. जब उनका communication बंद हो जाता है they begin to die, and then fewer and fewer neurons, fewer and fewer mental capacity, and that results in dementia. Okay, we can continue next time, no problem. pardon? We can continue next time, no problem. So यही पर रोकना है। हाँ नहीं, बस इसके आगे जो है आपका इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट, सो वी क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी आपने स्लीपलेस को टॉपिक को टच किया था। क्या हुआ? स्लीपलेसनेस। हाँ हाँ हाँ। व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस वन एंड व्हाट आर द हार्म्स एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी? तो ये अल्जाइमर्स के बारे में ना। हाँ वही स्लीपलेसनेस। Oh, sleeplessness. So it can be if you are not physically active, you can't have a good sleep. If you have sleep apnea, for example, that if you are sleeping and when you are breathing and you can't breathe, suddenly there is old age से ये भी होता है कि यहाँ पे ये गलत जहाँ विंड पाइप है वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ हो गई अगर, तो वो विंड पाइप को वो दबाती है। अगर आप बैक पे सोइए तो it will choke you, so then you can't sleep well. Or if you have anxiety for some reason, then you have problem. So there are multiple causes, and the organic causes are the sleep apnea and the growth in the throat, which chokes your windpipe. But emotional causes are very many, psychological causes. Okay, so maybe I should stop here and let you have your, I don't want to stand between you and your refreshments, so you can have those, and so if I get another opportunity I can speak to it. we will definitely we will. We all are highly thankful to Dr. Sharwan Kumar. He is a doctor actually, and we have number of questions. अभी नरेंद्र जी खड़े हैं, सभी के बहुत क्वेश्चंस हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इन्होंने बहुत से टॉपिक दिए हैं। पर्टिकुलरली अभी घेरा साहब ने पूछा कि नींद ख़त्म हो गई, और एक आदमी जो था वो उम्र के हिसाब से इतना बढ़ता गया, तो वो अपनी वाइफ को उसने पहले तो बड़े प्यार से उसका नाम से बुलाता था और वो बड़ी खुश होती थी, बाद में उसे डार्लिंग डार्लिंग कहना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि क्या आपको मेरे पे बहुत मोहब्बत आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि उसको अल्जाइमर हो गया था, उसका नाम भूल जाता था, तो वो डार्लिंग डार्लिंग कहता था। तो आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर बीवी का नाम भूल जाए तो आप डार्लिंग डार्लिंग कहिएगा। तो एनीवे इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये चाहूँगा कि एक लेक्चर नहीं, इसके लिए हम 4-5 लेक्चर जो है हम डॉक्टर साहब से कहेंगे, बिकॉज ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड वी आर फॉर्चुनेट एनफ। और आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मैंने अभी थोड़े महीने हुए हैं, एक डेढ़ महीना हुआ कि इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन इतना अपनापन सा लगा, इतना अपना इन्होंने 2-3 बार लेक्चर दिए। हम ये चाहेंगे कि ही शुड कंटिन्यू विद दिस। हैव योर रिफ्रेशमेंट, आप चाय लीजिएगा, और इसके बाद हमने फेयरवेल करना है इस सन को 2023 को, और वेलकम करना है 2024 को।